Hello student, I am Pramod sir, your math teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, today I am going to start your new exercise. Exercise number 6.3 of chapter 6. The triangle and its property. So student, this exercise has only 2 questions and on both questions I will discuss student. So students, before starting the exercise, we want to tell you that you have already know that angle sum property. I have told you angle sum property and second exterior angle property. Exterior angle property. These two property I have discussed to you in my previous video, but here again we discuss to you angle sum property of the triangle. Student, you know the sum of the all three angles of a triangle is equal to 180 degree. This is the angle sum property of the triangle. This is the triangle. This is first angle, second angle and third angle. This triangle has the 6 element, you know, 3 side and 3 angle. And the sum of the all 3 angles of the triangle is equal to 180 degree. I have told you. Means this angle and this angle, अगर इन सभी एंगल को आप ऐड करेंगे, सपोज दैट दिस एंगल इज x डिग्री एंड दिस इज x and this is x, so x plus x is equal to 180 degree. This is the angle sum property, student. And second is exterior angle. Suppose that we produce this side and this is the exterior angle, you know, this is the exterior angle. So what is the exterior angle property? Exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angle. Means इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन है, इसके सामने का एंगल कौन है. सो आप कहेंगे x डिग्री. नो, दिस इज रॉन्ग. नहीं, x नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ए भी एंगल बना हुआ है. इसके सामने जो एंगल बने हैं, तो इसके सामने एंगल ये है और ये है. दिस टू एंगल or the interior opposite angle of this angle, this exterior angle. So this exterior angle, if we write the name of one, then angle 1 is equal to angle x plus angle x. अब देखिए, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा. कौन सा? एक्सटीरियर एंगल. सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Student, your exercise 6.3 is totally depend on these two property. इसी दो प्रॉपर्टी पर आपकी ये टोटल एक्सरसाइज डिपेंड है. एंड वन प्रॉपर्टी, यू नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल, if two line intersect at a common point, then vertically opposite angle created, formed, you know. So अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल इज दिस. इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, आप जानते हैं. और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ओनली यू रिक्वायर टू नो दीज थ्री प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टी you will able to solve the exercise 6.3. So student, now I am going to start your exercise 6.3. Firstly student, I will write the question
If you have book, then you can read the question and you can understand also. Question number first is saying, student, find the value of the unknown x in the following diagram. In the following diagram. In the following diagram. Students, there are many diagrams are given in this question. I am taking only 3 diagrams. First diagram is, student, so this is x, A, B, C, and this is suppose that is 50 degree angle, and this is suppose that 60 degree angle. लग तो नहीं रहे हैं 60 degree, but suppose that this is 60 degree. And next I am taking fifth part, student. I am taking the fifth part. This is x, and this is x. And I am taking sixth part also, student, of this question. This is the right angle triangle. Right angle triangle, student. This is the 90 degree, and this is x, and this is 2x. By the help of these 3 questions, these 3 parts, you will solve the remaining part of this question, student. So, student, question is saying find the value of the unknown x in the following diagram. जो नीचे डायग्राम बने हैं उसमें x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. So, student, how can we find out the value of x? You know, x, 60 and 50 are interior angle of the triangle. So, student, if we talk about the solution of this question, part first, so you can write, we know that the sum of all 3 angles of the triangle is equal to 180 degree. आप जानते हैं इसको कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो x, एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. So angle x plus 120 degree is equal, sorry student, 60, 50, 110 degree. 110 degree is equal to 180 degree. So angle x is equal to 180 degree minus 110 degree is equal to 70 degree. Look here. Transpose 110 to the right side. So here in this side we are adding 110 in x. So when we transpose to the right side, we subtract 110 from 180. So we get the 70 at last, student. So in this way, student, we can find out the value of x. ऐसा आप क्यों बोले? You can write by the angle sum property. Angle sum प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, ट्रायंगल के
थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा by the angle sum property, student. So it's very easy, student. In this way you will solve this part also. First line you will write, we know that the sum of the three angles of the triangle is equal to 180 degree. After this, so angle x, what will you write? In second part, angle x plus angle x plus angle x is equal to 180 degree, student. You know, so x, that is 3x is equal to 180 degree. So now we transpose 3 to the right side. So angle x is equal to 180 degree upon 3, that is 60 degree. This is my answer. So this angle is 60 degree, this is 60 degree, and this is also 60 degree. So in this way you will solve this part also. And this is same, student. You will write the first line. We know that the sum of the three angles of the triangle is equal to 180 degree. In this part you will write this line also. And so angle x plus angle 2x plus 90 degree. This is the 90 degree, student. Symbol of 90 degree. ये सिंबल जहां भी बना है आप जानेंगे कि 90 डिग्री का एंगल. सो दिस इज 90 डिग्री. 2x प्लस x 3x, 90 को ट्रांसपोज करेंगे. आप देखिए थर्ड पार्ट में एंगल x प्लस एंगल 2x प्लस 90 डिग्री is equal to 180 degree. So 2x plus x 3x is equal to 180 degree minus 90 degree. So we get 180 minus 90, that is 90 degree. 3x, so x is equal to 90 upon 3, that is 30 degree. So x का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री होगा. x क्या होगा? 30 डिग्री होगा. अगर x 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा? 2x. 2 into 30, this is 2x, means 2 into x, means 2 into 30 is equal to 60 degree, is equal to 60 degree. 60, 30, 90 and 90, 180. The sum of the angle is equal to, the sum of all three angles is equal to 180 degree. So student, in this way you will solve this part also. In this way, student, remaining part you will solve yourself, student. That is very easy. So student, come to the next question. That is the question number 2. Question number 2, student, is saying find the value of the unknown x and y. Question 2. Find the value of, find the values of the unknown unknowns x and y in the following diagram. In the following diagrams.
Student, first diagram is and this side is produced in this direction and this is 120 degree and this is 50 degree, suppose student, and this is x and this is y. And second student, this is 50, this is y and this is 80 degree and this is x. I am taking only two part, student. And I am taking one part also, student, that is the last part, part number 6. This is x, this is x, this is y, this is x. So, student, these are very easy question. Find the value of the unknown x and y. In this question, in this diagram, you require to find the value of x and y both. Sorry, student. This is the, student, you know, in the first question, 120 degree is the exterior angle. 120 degree is the exterior angle. And exterior angle property, you know, exterior angle is equal to the sum of the two interior opposite angle. Two interior opposite angle means you can say 120 degree is equal to 50 degree plus x. So from here, by this equation, we can get the value of x. So x is equal to, student, 120 degree minus 50 degree is equal to 70 degree. x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. x is 70 degree. x is 70 degree. How can you write this line? By the exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल x और 50 डिग्री होगा, इसके सम के इक्वल होगा 120 डिग्री. सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस x. हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, स्टूडेंट. Now x plus y plus 50 degree is equal to 180 degree. Why? Angle sum property. By angle sum property. आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के थ्री इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो द वैल्यू ऑफ x you have already find out. So on the place of x you can write 70 degree. 70 degree plus y, you can write like this: y plus 70 plus 50 is equal to 180 degree. Now student, y plus 120 degree, 70, 50, 120 is equal to 180 degree. So from here you can find out the value of y. You have to transpose 120 to the right side. So 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. Y
तो मैं y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और x का भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। x इज इक्वल टू 70 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, 70 60 130 and 50 180, you know the sum of the all three angles of the triangle is equal to 180 degree, you know. So student, this is very easy, only use the property and find the answer. As same student, as same y, x and 50, this is the y. If we talk about the second part, then y is equal to 80 degree. एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल y कितने का होगा? 80 डिग्री क्या होगा? y वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यू नो। सॉरी स्टूडेंट, सो एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y vertically opposite angle, vertically opposite angle, vertically opposite angle, vertically opposite angle से आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? 80 डिग्री का होगा। एंड नाउ एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why? Angle sum property. By the angle sum property. By angle sum property. By angle sum property. से आप बोल सकते हैं. So the value of y is equal to 180 degree. So on the place of angle y, you can write 80 degree. So angle x plus 80 degree is equal to 100 plus 50 degree plus 50 degree is equal to 180 degree. So angle x is equal to 180 degree minus 80 and 50, 130 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल x 50 डिग्री, एंगल x 50 डिग्री, एंगल y 80 डिग्री, 80 50 130, 130 प्लस 50 180। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं। एज सेम स्टूडेंट, यू नो एंगल y, if we talk about the part 3, since angle y is equal to angle x, एंगल y किसके इक्वल है? एंगल y जो है x के इक्वल है, x के इक्वल है। सो दिस इज x, दिस इज x, so this angle will be x also and x will be equal to angle y and this is also angle y। अब देखिए, since angle y is equal to x, so this angle will be y। सबसे पहली बात तो ये एंगल x है तो ये कितना होगा? ये भी x होगा, लेकिन x किसके इक्वल है? x y के इक्वल है। x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। सो दिस एंगल विल बी, यहाँ x है लेकिन x किसके इक्वल होगा? y के। यहाँ x होगा क्योंकि ये x है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज x, सो दिस इज x। बट x इज इक्वल टू y के, x इज इक्वल टू y, सो ऑन द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट y, इसीलिए मैंने यहां पर y राइट किया है, y। नाउ एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आप राइट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं यहां पर। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, y 3y is equal to 180 degree, so y is equal to 180 upon 3, 3 6 18, 60 डिग्री। एंगल y क्या हुआ? 60 डिग्री का हुआ, so this is 60 डिग्री, this is 60 डिग्री
and this is 60 degree also. So student, I hope you have understood this question very well, and remaining part of this question you will do yourself. So this exercise has only 2 questions which you are seeing on the board. So student, in my next video I will start your new exercise 6.4. So thank you student, thank you very much.